हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है इन केस एट द फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जैसे कि ये मेडिसिन है ओजानिमोड हाइड्रोक्लोराइड, ये तैयार हो रहा है। ये तैयार होने के दौरान अगर इसके फ्यूम्स की वजह से या फायर होने की वजह से या आग लगने की वजह से या किसी भी दुर्घटना की वजह से अगर पेशेंट हॉस्पिटल में लेने की आवश्यकता पड़े, हॉस्पिटल लेके जाने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बहुत ही काम आता है। इसमें यह होता है कि इस मटेरियल में कौन से गुणवत्ता है, जिसकी वजह से किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसमें आसानी होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर। तो ये जानते हैं क्या है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 1272/2003 EC। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस जो है इसमें है, प्रोडक्ट नेम है ओजानिमोड हाइड्रोक्लोराइड। तो ये ओजानिमोड हाइड्रोक्लोराइड जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उपयोग किया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर। तो हजार्डस आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका? हजार्डस आइडेंटिफिकेशन इसमें दिया गया है एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल ओरल, जो कि H302। For the full text of each statement mentioned in this section, तो के लेबल एलिमेंट GHS लेबल वगैरह, तो ये वार्निंग का सिग्नल है, साइन ऑफ वर्ड वार्निंग P3093 प्लस P311, इसका मतलब वो हार्मफुल इफ स्वालो इन कॉन्टैक्ट विथ स्किन और इफ इनहेल्ड। प्रिक्वेशन जो P309311, इसका मतलब होता है अगर यह है जानलेवा हो सकता है निगलने से या चमड़े में लगने से या श्वास के द्वारा लेने से। प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। P264, इसका मतलब है वॉश स्किन थ्रोली आफ्टर हैंडलिंग। तो P270 ये कोई प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में पूरे वर्ड में लिखा नहीं जाएगा कि जैसे कि वॉश स्किन थ्रू आफ्टर हैंडलिंग, वैसे नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट P264 लिखा जाएगा। वो देख के समझना चाहिए कि इसका यह मतलब है। P264 इसका मतलब होता है वॉश स्किन थ्रोली आफ्टर हैंडलिंग। P270 इसका मतलब होता है डू नॉट ईट, ड्रिंक और स्मोक व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट। P273 इसका मतलब होता है अवॉइड रिलीजिंग टू द इन्वायरमेंट। P301 प्लस P312 इसका मतलब होता है इफ़ स्वालो कॉल पॉइजन सेंटर और डॉक्टर फिजिशियंस इफ़ यू फील अनवेल। तो उसका मतलब होता है P330, इसका मतलब होता है रिंस वाटर। P391 इसका मतलब होता है कलेक्ट स्प्लेज। P501 इसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ कंटेनर टू एन अप्रूव वेस्ट डिस्पोजल प्लांट। कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट, तो इसमें जो है कंपोजिशन क्या क्या है सिनोनिम्स में लिखा गया है 5,3,1s1 2 हाइड्रोक्सी इथाइल अमीनो 2 3 हाइड्रो 1H एडिन 4 वायल 12 4 ऑक्साडायाजोल 5 वायल 2 प्रोपान 2 वायल OXC बेंजोनाइट्राइल मोनोहाइड्रोक्लोराइड। ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C23H24N4O3HCl, मॉलिक्यूलर वेट 440.92। फर्स्ट एड मेजर क्या दिया गया है इसमें? जो है फर्स्ट एड मेजर दिया गया है इफ़ इनहेल्ड, अगर श्वास के द्वारा लिया गया तो इसमें फर्स्ट एड क्या दिया गया है? इमीडिएटली रिलोकेट सेल्फ और कैजुअलिटी टू फ्रेश एयर। If breathing is difficult, give cardiopulmonary resuscitation (CPR). Avoid mouth-to-mouth resuscitation. In case of skin contact, rinse skin thoroughly with large amount of water. Remove contaminated cloth and shoe and call a physician. In case of eye contact, अगर आँख में गिरा तो क्या करना है? Remove any contact lens, locate eye wash station and flush eyes immediately with large amount of water. In case of eye contact, अगर आँख में गिरा तो क्या करना है? Remove any contact lens, अगर आप contact lens लगाए तो contact lens को निकालो. Locate eye wash station and flush eye immediately with large amount of water. Separate eyelid with finger to ensure adequate flushing. Prompting call a physician.
इफ swallowed, अगर निकल गए तो क्या करना है? नेवर गिव एनीथिंग बाय माउथ टू एन अनकॉन्शियस पर्सन. वॉश आउट माउथ with water. Do not induce vomiting unless directed by medical personnel. Seek medical attention immediately. Fire fighting measures. क्या है fire fighting measures? Extinguishing media. Use water spray, dry chemical foam and carbon dioxide fire extinguisher. Fire explosion hazards. Fine particles such as dust and mist may fuel fire explosions. Hazardous combustion product emits toxic fumes of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides. Accidental release measures क्या रहता है? Personal precaution. Use full personal protection equipment. Avoid breathing vapor, mist, dust and or gas. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe area. Refer to protective measures list in section 8. Environmental protection क्या होता है? Try to prevent further leakage or spill. Keep the product away from the drain or water course. Method and material for contaminated and cleanup. तो इसमें क्या दिया है? Measure for cleaning or collecting. Absorb solution with freely powder liquid. Bindly material diatomite universal binder. Decontaminated surface and equipment by scrubbing with alcohol. Dispose of contaminated material according to section 13. Addition consideration of large spill. Large spill हुआ तो क्या है? Non-essential persons should be evacuated from affected area. Report emergency situation immediately. Clean up operation should only be undertaken by trained person. तो इसमें हैंडलिंग एंड स्टोरेज क्या है? प्रिकॉशन फॉर सेफ हैंडलिंग. मिनिमम डस्ट जनरेशन. अवॉइड ब्रीथिंग डस्ट. अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आई, स्किन एंड क्लोथिंग. व्हेन हैंडलिंग यूज एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. वॉश हैंड and any exposed skin after removing of PPE. Release to the environment should be avoided. Review and implement appropriate technical and procedural waste, water and waste disposal measures to prevent occupational exposure or environmental release. Potential points of process emission of this material to the atmosphere should be controlled with dust collector, HEPA filtration system or other equivalent control. Condition for safe storage. Preserve in well-closed container. Store at controlled room temperature, that is between 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Exclusion are allowed between 15 degrees Celsius and 13 degrees Celsius. Exposure control. Personal protection. Personal protective equipment, glasses, gloves, respirator, particulates, etc. Respiratory protection. For this high potent drug exclusively, we are recommended to wear respirator, venous chemical 2F PAPR comprising of air turbo unit, comfort belt, breathing hosepipe, HEPA filter, digital indicator, flow cartridge, battery indicator and carrying bag, and the same use of Ozanimod hydrochloride manufacturing process. The PPR specially designed for particle and chemical filtration, use of dust and non-toxic and toxic fume, solid and liquid aerosol, bacteria, virus and gases. Wearing this respirator with a protection factor sufficient to control explosions. Hand protection. Wear impervious gloves to prevent skin contact. Eye protection. Wear protective chemical safety goggle. Skin and body protection. Wear impervious gloves to prevent skin contact. Consider use of disposal clothing where appropriate. Hygiene measures. Avoid contact with skin,
eye and clothing, wash hand before break and immediately after handling the product. Physical and chemical property, appearance जो है white to off white solid, melting point melt at 236 to 240 degrees Celsius, pK strongest acid 15.6, pK strong base 8.96, solubility soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in methanol, practically insoluble in dichloromethane. Stability and reactivity, incompatible material, strong acid or alkalis, strong oxidizing or reducing agent. Toxicological information क्या है? Acute toxicity, lethal dose 50, greater than equal to 200 mg per kg oral rat. Disposal consideration, waste treatment method, dispose of waste in accordance with all applicable law and regulation. Member, state specific and community specific provision must be considered, considering the relevant non-environment and human health hazards of the material. Review and implement appropriate technical and procedural waste, water and waste disposal measure to prevent occupational exposure and environmental release. It is recommended that waste minimize be practice. The best available technology should be utilized to prevent environmental release. This may include destructive techniques for waste and wastewater. Transport information, not regulated for transport under US DOT, EU ADR, IATA or IMDZ regulation. Regulatory information, the safety data sheet complies with the requirement of regulation number 1907 to 2006. Chemical safety assignment, a chemical safety assignment has not been made for this product. Other information, text of H codes and R phase mentioned in this section. H codes का मतलब होता है H302 harmful if swallow, H312 harmful in contact with skin, H332 harmful if inhale. R phase में क्या होता है? R41 risk of serious damage to eye, R42 may cause sensitization by inhalation, R43 may cause sensitization by skin contact. Notice, this information and recommendation in this safety data sheet are to the best of our knowledge, accurate and the date of issue. Nothing here shall be deemed to create any warranty, express or implies. It is the responsibility of the user to determine the applicability of the information and suitability of the material for any particular purpose. Thank you for watching this video. At the end of this time, please like, share, subscribe. Further, I will make new video for great information.